Hello, 1, 2, 3. Good afternoon. Just hold on, please. हाँ बेटे, वो ब्लैक स्क्रीन आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा इसमें यूट्यूब में। हाँ, कैमरा ऑन है, इस कैमरा में आ रहा। वीडियो कॉल करो, ठहरो। कैमरा बताइए। बैक कैमरा करिए। बैक कैमरा करिए। ऐसा कैमरे पे वीडियो आ रही कैमरे में। हाँ, कैमरे में आ रही वीडियो। ओबीएस बताइए। ओबीएस बताइए। मेरे को नहीं देखिए, आप कैमरा चेंज करिए। आप फोन का कैमरा वहाँ पर देखिए, लेफ्ट पे देखिए। लेफ्ट पे देखिए। लेफ्ट वहाँ पर एक आई का वीडियो इनपुट मिल कर रहता है, वहाँ पर एक आई का ऑप्शन रहता है। ये हाँ, बंद करिए, खोलिए। नहीं आ रहा। कैमरे पे वायर है, देखिए। कैमरे से वायर निकाल, यूएसबी सी का वो रिस्टार्ट करिए, वो निकाल के लगाइए। क्या निकाल के? कैमरे पे वायर निकाल रहा, देखिए। कैमरे से हाँ, उसको निकाल के लगाइए एक बार। लगाया। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा हूँ। नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना क्या? हाँ, 12। नहीं आ रहा स्क्रीन।
Am I audible and visible, boys and girls, now? Is it okay? Give me the clearance. Zoom कहाँ है भाई? Is it okay now? All clear? Okay. So there was some issue with the camera, that's why it got delayed. Sorry for inconvenience. Just hold on, please. तुम कब तक आते हैं यहाँ पे? तुम जरा ऊपर आ जाओ फौरन। हाँ, क्या कि जूम नहीं हो रहा कहते हो? तुम अब रहने दो बेटे, वैसे ही रहने दो। Okay, boys and girls, let's start. ठीक है, देखेंगे अभी कैमरा का इशू देखेंगे. My person would come and check it. Very good afternoon to all of you. Welcome to an academy platform. This is Dr. Khaleel Khan welcoming you on board this PYQ session. Eventually, it got scheduled now. Okay, very good. I never used to operate, in fact, so that's why, and today my technical person is not available, so that's why it got held up for some time. No issue. These are all settings, matter of settings, so ultimately backend person has done it. Zoom का भी देखेंगे, what is the issue in the camera, because I don't want to disturb it. Let's continue for a while like this, and I'm very sure shortly थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. So boys and girls, this is the PYQ session. काफ़ी important session है operating system में. So today's session will have operating system. फिर बाद में और एक सेशन होगा algorithm का separately. So algorithm का separately देखेंगे. आज operating system की बात करेंगे. थोड़ा सा मैं एक्चुअली आई एम अनेबल टू डू इट. जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में थोड़ी देर में हम जूम कर लेंगे. नो इशू. ठीक है, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा. आफ्टर 5 मिनट्स वन पर्सन वुड कम एंड ही वुड लुक एट द कैमरा, व्हाट इज द सेटिंग. टिल दैट टाइम आई होप वी कैन मैनेज. ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, objective is behind every question you should also try to see what are the possible variations. ये आपको देखना बहुत जरूरी है. Duration I exactly cannot say. We will try to complete all the questions. Duration हमें नहीं मालूम कितना लगेगा टाइम. मिनिमम 2 आवर्स तो लगेगा, शायद उससे बढ़ के भी हो सकता है. ठीक है, तो बच्चों every question you should take it like as if you are working in the exam. शायद हो सकता है आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, तो फिर से आप एक बार एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि PYQ सीरीज के जितने आप मल्टीपल आइटरेशंस करोगे उतना आपको आसान होगा. ठीक है, उतना आसान होगा. तो यू टेक एवरी क्वेश्चन सीरियसली, और वो क्वेश्चन के पीछे जो और कॉन्सेप्ट्स है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, एंड उसका वेरिएशन क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे. पिछले महा रिविजन कोर्स में सिमिलर क्वेश्चंस के मैंने थोड़े चेंजेस करके आपको बताए थे. अब विदाउट चेंजेस दोस क्वेश्चंस विल कम हियर. Aisha Sonkar, we will discuss about algorithm when we take up algorithm class. We will discuss about algorithms. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी मच डिले we will start the session. So these are the topics that we are going to cover up: process concept, CPU scheduling, and process synchronization and deadlock, memory management, and file system. I will try my level best to cover maximum possible questions. At the same time, you should take it in a very very serious and sincere way. ठीक है. हाँ, न्यूमेरिकल्स आएंगे. मल्टी लेवल पेजिंग का भी न्यूमेरिकल है, डोंट वरी. सेगमेंटेड पेजिंग का अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन इमीडिएटली देकर आपको सॉल्व कर पाऊंगा. ठीक है ना,
राइट, यू शुड डू इट लाइक एग्जाम, दैट इज द ब्यूटी। अगर ये सेशन को आप फुल्ली यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो you should work out very sincerely and seriously as if you are working in the exam within time constraint, not casually, तभी इसका यूजफुलनेस जस्टिफाई होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। ओके राइट, थैंक यू। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस कॉन्सेप्ट से जल्दी देखिएगा। 2011 का सेट 1 या सेट 2 का क्वेश्चन है। सेट 1 का है सर। 2011 देयर वाज ओनली वन सेट आई बिलीव। दिस वाज द क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है। This is basically general principles of operating systems, general principle of computer system related with the concept of interrupts. Related with the concept of interrupts. Interrupt एक काफी important topic है operating system और CO, computer organization plus operating system का overlapping concept है, तो interrupts की काफी अच्छी knowledge होनी चाहिए। 4 किस्म के इंटरप्ट है यहां पर। इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू टेम्परेचर सेंसर, इंटरप्ट फ्रॉम माउस, इंटरप्ट फ्रॉम कीबोर्ड, इंटरप्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क। विच वन ऑफ दीज विल बी हैंडल एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखिएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा हैंडल होना चाहिए। नेचुरली देखिएगा बच्चों, इसमें से अगर आप देखेंगे सीपीयू इज अ वेरी क्रिटिकल रिसोर्स, सीपीयू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। अगर प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोसेसर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो immediately the operating system will have to take some action. The computer system and the operating system together will have to deal with it. Otherwise आपका प्रोसेसर डाउन हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू टेम्परेचर, लाइक मेनी पीपल सेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीबडी गेव द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन देखा था, फिर भी रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, इमीडिएटली एज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन देख लीजिएगा। लेट द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड बी T1 while the time taken to switch between 2 user processes be T2। तो डायग्रामेटिकली फिर से समझा रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा। जो बच्चों ने महा रिविजन में नहीं देखा था, when I am shifting from one process to another process, the time taken to switch between these two processes or from this process to this process is T2। Process switching, remember, process switching involves mode shifting। mode shifting time process switching time में add होगा। So therefore the time for this is T2, whereas the time to shift from one mode to user mode to kernel mode is T1। So T1 will be less than T2। So correct answer is C। Correct answer is C। Very correct। Next question। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने रिवर्स किया था सीपीयू शेड्यूल महा रिविजन में। देखेंगे कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है, या कंफ्यूज होते हो आप। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। What is the correct answer for this? What is the correct answer for this? A thread is usually defined as a lightweight process because an operating system maintains smaller data structures for a thread than for a process. In relation to this, which of the following is true? Which of the following is true? On per thread process basis, the operating system maintains only CPU register state. देखिए, this would have been correct if I don't have only गलत है। We are not just storing information about CPU registers. We are storing information about several other things. So only is wrong. The operating system does not maintain a separate stack. गलत बात है। Operating system maintains a separate stack for every thread. On per thread basis, the operating system does not maintain virtual memory address or virtual memory state. This is true. हमने डिस्कस किया था, लेकिन there I asked which of the following are false, and which here it is asking which of the following is true. That is the difference. So therefore this is also wrong because based on same justification as option A. So therefore the correct answer is C for this. Next, बहुत simple question है, बहुत simple question है। 3 folks in series. Good afternoon to all of you again, welcoming you on board. Come on, answer me this question. Answer this question. बहुत simple question है।
Process execute the code. The total number of child processes created, but we have to be very careful. He is asking child processes. टोटल प्रोसेसेस अगर पूछे जाते हैं तो 8 होते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस विल बी 7. अनडाउटेडली आंसर इज सी. अनडाउटेडली द आंसर इज सी. चलो वेरी वेरी सिंपल. इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. टेल मी द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू. Come on. Is false. User level threads are not scheduled by the kernel. This is true. This is true. When a user level thread is blocked, all other threads of its process are blocked. True. Context switching between user level threads is faster than context switching between kernel level threads. True. So therefore, kernel level threads cannot share the code segment. That is false. So our correct option is D, as many people have said. As many people have said, correct option is D. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था शायद अर्लियर. टेल मी द आंसर फॉर दिस. come on, tell me the answer for this. What is the answer for this? Yes. For this answer is n, independent of n, D. लेकिन इसका वेरिएशन आ सकता है बच्चों, इसका वेरिएशन आ सकता है, राइट? अगर मैं ये कहूं, if I will slightly give a variation of this question. If the system has n processes and m CPUs, m is greater than or equal to 1 and n is greater than m. ये कंडीशन देखिएगा. आई एम वेरिंग द क्वेश्चन का वेरिएशन आपको बता रहा हूं. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तब सोच समझ के आंसर दीजिएगा प्लीज. सिस्टम हैज n processes and m CPUs. What is the maximum number of processes that can be in ready state? Maximum number of processes that can be in running state. इसका वेरिएशन. And what is the maximum that can be in the block state? Come on, answer for this. Give me the answer for this variation of the question. Those who have attended my paid class, I am sure they should be able to answer this question. Jyoti Driveved, no, it is wrong. It is wrong. This is n, small n. Let me write it with clarity if there is a confusion for you. If there is a confusion for you, let me write this is small n. This is small n, this is small m. The maximum number of processes that can be in the ready state now is n. The maximum running, one CPU will run one process, so I have m CPUs, so therefore m. And the maximum who can be blocked is again all n processes can be blocked. So therefore now the answer for this question will become n, m and n. n, m and n. इसका वेरिएशन ऐसा आ सकता है. You have to be prepared for it. तो अगर आपका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्लियर हो, what is ready, what is running, what is blocked, then you can definitely answer such question. Minimum भी पूछा जा सकता है. What can be minimum who can be in ready, minimum running, minimum block, ये भी आपको पूछा जा सकता है. मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, मिनिमम भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा जा सकता है. ओके, सो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए. Generally, people get confused with this type of questions also with regard to threads. Lot of questions have brought under threads because thread is a very conceptual topic है, and also it requires a good amount of understanding.
Anup Jha, it will come only with a matter of practice. You have to do a lot of practice for it. You have to do a lot of practice for it. Come on, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. Always remember threads of a process will share global variables. मैं फिर से पॉइंट लिख रहा हूं, शायद I remember I did that in the Maha Revision. Threads of process share global variables and heap. हाँ, मल्टीपल प्रोसेसेस, ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों. मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएटेड यूजिंग फोर्क सिस्टम का, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू से चाइल्ड एंड पेरेंट will not share address space including heap and global variables. ये पॉइंट याद रखने की है. It's an important point. You can expect question based on this as a variation. Again I am repeating, threads of process, एक process के जो multiple threads है ना, they will share global variables and heap. Next, multiple processes that are created using fork system call से जब आप multiple processes create करोगे, right? So no two child, अब फर्ज करिए you have child and parent, they will never share global variables and heap. This is a confusing point. बच्चे confuse होते हैं यहाँ पर. They will not share global variables and heap. Then what can they share? Can you write down in the chat box please and let me know what can they share? Parent and child process, when child is created from parent using fork, so parent and child will share what? If they cannot share, if they cannot share global variables and heap, then what will they share? Can you please write down in the chat box and let me know? What will they share? No, boys and girls, stack will also be not shared. Two processes will have their own separate stack. No. कोड सेगमेंट रेप्लिकेट होगी, कॉपी होगी, लेकिन शेयरिंग में नहीं आएगी. एड्रेस स्पेस भी शेयर नहीं होगा, एड्रेस स्पेस रेप्लिकेट होगा, कॉपी होगा. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नहीं समझ रहे हो. दिस यू कैन एक्सपेक्ट एज अ क्वेश्चन. यस, आईपीसी एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, करेक्ट. एड्रेस स्पेस शेयर नहीं होगा. पीयूष सक्सेना, एड्रेस स्पेस विल नॉट बी शेयर्ड. You will share, I told this point in the last class, they will share IPC mechanisms. They will share IPC mechanisms like pipe or shared memory SHM or message queue. IPC mechanism share होंगे. I think now it is zoomed. Is it okay? The video is zoomed now, I believe. So IPC mechanism is shared, remember, like pipes, message queues, right? Semaphores अगर हो तो semaphores भी share कर सकते हैं. Synchronization and IPC mechanisms या फिर monitor है, these will be shared. Yes, so that is the point. I hope this question is clear now. You are able to understand the mechanics of this now. Okay, very good. चलिए. Next we will go for the next question. चलिए, again a sort of repetition है, लेकिन आंसर कीजिएगा प्लीज. रिपीटेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा. Come on, answer this question. What is the answer for this? Oh my God, people are saying C.
What is the correct answer for this? Come on, Muhammad Asif, Das, S Das. Which of the following is or are shared by all the threads in a process? Program counter is not shared, stack is not shared, registers are not shared, only address space is shared. Address space is shared. Good afternoon, Chandra Prakash. How are you, Chandra Prakash? चलिए, so therefore only address space is shared. अभी हमने डिस्कस किया था, so therefore 3 only. चलिए जल्दी आगे बढ़ेंगे. जल्दी बताइए इसका आंसर. रिलेटेड टू फोक सिस्टम कॉल है. इसके बाद एक थोड़ा वेरिएशन भी लूंगा मैं. हाँ बिल्कुल, आयुष राजपुरोहित. स्टैक इज नॉट शेयर्ड, हीप इज शेयर्ड. वेरी गुड, ये याद रखिए हमेशा. स्टैक इज नॉट शेयर्ड, हीप इज शेयर्ड. This is executed for even number of i's, even values of i's. So that means there are 5 even values starting like 0, 2, 4, 8, 6, 8, 5 values. So matlab this fork system call will be executed 5 times. Total processes 2 power 5, 32 honge. Number of child processes minus 1, 32 minus 1, 31. So therefore directly we'll write 31. Very correct. ठीक है ना? So there is no problem in this. एक रिलेटेड टू फोर्क क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा. आप प्लीज उसका आंसर बताइएगा. फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस i इफ i mod 2 सेम क्वेश्चन रखूंगा मैं. I mod 2 equal to 0, fork. And then I say, very interesting question, boys and girls. Printf star. बच्चों देखेंगे कौन बताएगा आंसर. कौन बताएगा? Tell me how many times star get printed. Write down in the chat box. इसका वेरिएशन लिया हूं मैं क्वेश्चन का. हाँ 0246 करेक्ट. या फिर आप 0 से अगर राइट करोगे 0 mod 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा तो 2468 होगा. 02468 5 वैल्यूज. आई एम सॉरी, सूफी अहमद. देखेंगे कौन आंसर देगा इसका. वेरी इंटरेस्टिंग. अभिन वर्गीज वेरी गुड. आयुष राजपुरोहित वेरी गुड. विवेकानंद वेरी गुड. देखिएगा बच्चों, गौर कीजिएगा. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि दिस प्रोग्राम, लिसन टू मी बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आप ये टोटल प्रोग्राम देखो, दिस प्रोग्राम विल बी एसोसिएटेड विद टोटल हाउ मेनी प्रोसेसेस. दिस प्रोग्राम विल बी एसोसिएटेड विद टोटल हाउ मेनी प्रोसेसेस. ये बताइए खाली, दिस 41 42 कहां से आ रहे हैं? दिस प्रोग्राम विल बी एसोसिएटेड विद टोटल हाउ मेनी प्रोसेसेस? 32, इंक्लूडिंग ओरिजिनल पेरेंट जो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है. तो टोटल 32 में से, टोटल 32 प्रोसेसेस में से 31 चाइल्ड प्रोसेसेस है. 31 चाइल्ड प्रोसेसेस है. एम आई राइट? टोटल प्रोसेसेस आर 2 power n, क्योंकि फोर्क एग्जीक्यूट कितने टाइम हो रहा है? 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने से नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस बनेंगे 31, और ओरिजिनल जो आपका पेरेंट प्रोसेस था वो एक था. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 32. और ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड द फॉर लूप, एंड दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय
all processes including parent. Many people have gone wrong, including now. Samir Lonare, how is it 32 plus 5? How is it 32 plus 5? Please understand. All processes including parent. So therefore, how many total processes I have? 32. How many total processes I have? 32. 32 से बढ़ के processes नहीं है. अगर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका थोड़ा वेरिएशन लेके आपको दूंगा, प्लीज गौर कीजिएगा. यहां पर मैंने अपने पेड बैच में डिस्कस किया था, शायद आप भूल रहे हैं. इफ आई जस्ट राइट ए लूप, आई एम नॉट राइटिंग द होल प्रोग्राम. इफ फॉर i is equal to 1, i less than or equal to 10 plus I. If fork equal to 0, printf star. Look, listen to me. Please listen to me. This is my program. I would like to ask you, how many times star get printed? Answer me, please. Answer me. How many times star get printed now? Understand? Abhay Singh, this address space will not be shared when you create a child process. Address space will not be shared. Abhay Singh, when you create a child process using fork, address space will not be shared. How many times star get printed? Star question hai ye. Ankita Mishra, it will not be 32. It will not be 32. Please understand. Sufia Ahmad, it is not 32. Oh my God. Oh my goodness. अब यहां बताइएगा बच्चों, fork statement is getting executed how many times? Many people are giving correct answer also. Fork जो statement है, fork system call जो है, वो कितने टाइम execute हो रहा है? It will be executed 10 times. It will be executed 10 times. Am I right? 10 times execute होने से number of child processes कितने बनेंगे? नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कितने होंगे? 2 power 10 minus 1, 1023. 1023. 10 times नहीं, 1023 चाइल्ड प्रोसेसेस होंगे. एंड दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एवरी चाइल्ड. दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एवरी चाइल्ड. दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एवरी चाइल्ड, बट नो पेरेंट प्रोसेस. तो मतलब नंबर ऑफ टाइम दिस विल गेट प्रिंटेड इज 1023. तो जिन्होंने भी 1023 कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इट इज प्रिंटेड ओनली बाय चाइल्ड, नॉट बाय पेरेंट. सो नाउ द आंसर इज 1023. समझ गया ना? इज इट ओके एवरीबडी? नाउ यू गॉट द पॉइंट. व्हाई इट इज 1023? बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटेड बाय 10 times fork. So total number of processes are 1024. Child processes are 1023. So therefore you got it now. I make another variation to this. Please follow. I will make another variation to this. देखिएगा. Right? I will make a small variation to this. एक वेरिएशन ये कर रहा हूं बच्चों, यहां पे आप देखिएगा, गौर कीजिएगा. This fork. I put a semicolon here. I put a semicolon here. देखेंगे how many of you will get confused. I will put a semicolon, another semicolon here, and I ask the same question. Now tell me how many times star get printed. Let me see who will answer. Come on fast. I am putting star semicolon here and then print star. So how many times star get printed? Come on. How many times star get printed? Come on, Chandra Prakash, please answer. Give me the answer. I have put semicolon now. Farhan Khan. No. Oh my God. Abhin Varghese. How is it one time? How is it one time? Oh, people are getting confused. Correct answers are coming as 1. Answer is coming as 1024. Answer is coming as 10. Oh my God. Oh my God. बहुत गलत है.
Do you understand that this statement now will be executed by all children, and also parent, and also original parent? Oh, Deepak said fork equal to 0 means what? Fork equal to 0 means child process. So total processes execute honge ab total are how many? 1024. Now the answer is 1024. So those who said 1024, then it is correct. Those who said 1024, then it is correct. I hope you got it now. Now this print is outside if it is outside if for loop is ending here. So this will be executed by all the processes, total processes. So boys and girls, these things are too important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे ऐसे छोटे चीजों के ऊपर आपको अपना फोकस मेंटेन करना होगा, केयरफुली अप्लाई करना होगा, वरना फिर गलत हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Consider the following statements about process state transition using preemptive scheduling. देखिएगा, you should not miss these statements. Using preemptive scheduling, a running process can move to ready state. Process which is running, when it gets preempted, will go to ready state. Yes, this is true. A ready process can move to running state. Scheduling है. A block process can move to running state. Block process never move to running state in a typical multi-programmed operating system environment. Multi-programmed operating system environment में ये नहीं होगा. आप कुछ बोलोगे सर यहाँ पर तो multi-programmed operating system मेंशन नहीं किया गया है. देखिएगा जब वर्ड प्रीएम्प्टिव आएगा तो बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलना पड़ेगा कि दिस इज प्रीएम्प्ट, दिस इज मल्टी-प्रोग्राम. जब हम प्रीएम्प्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोसेस प्रीएम्प्ट जब ही होगा जब मल्टीपल प्रोसेसेस है. सो इट इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड टू बी मल्टी-प्रोग्रामिंग, राइट? So this would be true only in uni-programmed operating system. ये जो ऑप्शन है ना, a block process can move to running state is true only in uni-programmed operating system. ये भी बात याद रखिएगा. Next, a block process can move to ready state. Yes, after completing IO or system call, it can go. So therefore 1, 2 and 4. Option C is correct. Option C is correct. चलिए वो भी पॉइंट मैं आपको बता दिया हूं. Under what circumstantial situation this will be true? This will be true only, यहां पे लिख रहा हूं मैं आपके नोट्स के लिए, true only in uni-programmed OS. ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता, वेरिएशन इसका ऐसा हो सकता है. स्टेटमेंट नंबर 3 will be true in which case? It will be true in uni-programmed operating system. Am I right? Okay. Next. चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा. Aisha Sonkar, in uni-programmed operating system you will not have ready state. uni-programmed operating system का अगर आप डायग्राम मुझे बताने के लिए कहोगे तो uni-programmed operating system का यहां पे बता दूंगा मैं आपको. uni-programmed operating system का those who do not know please have a look. न्यू से आएगा, डायरेक्ट होगा रनिंग. uni-programmed डायरेक्ट होगा रनिंग, रनिंग से ब्लॉक, ब्लॉक बैक टू रनिंग, रनिंग से टर्मिनेट. यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यह है ऑप्शन. दिस विल बी द डायग्राम फॉर यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इन यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल नेवर हैव रेडी, यू विल नेवर हैव सस्पेंड. सस्पेंड स्टेट भी नहीं होगा, सस्पेंड स्टेट भी नहीं रहेगा यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में. प्लीज रिमेंबर, in uni-programmed operating system there is no meaning logically for suspension of the process. You will have only new, running, block, back running and terminate. That's it. That's it. चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बता दीजिएगा प्लीज. HC Verma batch has already been launched. You can get take the subscription. बिल्कुल परचेस कर सकते हो आप.
Yes, चलिए, which of the following standard C library functions will always, he is using the adjective always, invoke a system call when executed from a single threaded process. In Unix or Linux operating system, exit will generate always, malloc not always, but generally for the first activation, not always but generally for the first activation. पॉइंट्स भी लिख रहा हूं मैं आपके नोट्स के लिए. फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे तो एक्टिवेट होगा सिस्टम कॉल, लाइक मेमोरी ब्रेक और ब्रेक सिस्टम कॉल, एंड देन आफ्टर दैट फॉर द सब्सिक्वेंट मैलॉक इट मे नॉट. स्लीप कॉल करेगा, स्ट्रिंग लेंथ इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट विल नेवर, right, it will never, so therefore not always. So only option A and C are correct. Option A and C are correct. Nishu Kumar, uniprogramming can never be preemptive. There is no meaning of preemption there. जब आपके पास एक ही प्रोसेस होगा तो preempt करके करोगे क्या? What will you do with preemption if there is only one process in memory? चलिए अब आएंगे CPU शेड्यूलिंग पर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यहां पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. Let me see how many of you will get confused. Let me see how many of you will get confused. Come on, answer me. और एक बात कर रहा हूं, revisit 39 is also asking an interesting question. What will happen when multi-threaded? बच्चों याद रखिएगा, multi-threading is also meaningful in only multi-programming. Uni-programmed operating system में कभी भी multi-threading का concept नहीं था, कभी भी नहीं था uni-programming. हाँ चंद्र प्रकाश, अगर ऑलवेज नहीं दिया जाता तो हम मैलॉक भी सेलेक्ट करते, बिल्कुल सही बात है, चंद्र प्रकाश इज करेक्ट. अगर ऑलवेज वर्ड नहीं आता तो हम मैलॉक को भी करेक्ट सेलेक्ट करते, बिल्कुल सही बात है. चलिए आंसर बताइए इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, ट्रू. प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज प्रीएम्प्टिव, सो दिस विल कॉज राउंड रॉबिन इज बेटर देन FCFS in terms of response time, absolutely correct. So therefore D is correct answer. 1 2 3 बिल्कुल सही. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा प्लीज. इसका थोड़ा वर्कआउट करके बताना पड़ेगा आपको, और मैं चाहूंगा मेरे वर्कआउट करने से पहले जो मेजॉरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करेगी मैं वो सेलेक्ट करूंगा. मेजॉरिटी, कम ऑन, डू इट प्लीज एज ए वार्म अप एक्सरसाइज. एज ए वार्म अप एक्सरसाइज प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर दिस. No, it cannot be considered as concurrency in DBMS. No, it is not. Come on, work out. Numerical question है. Everybody should work out. Response time का क्वेश्चन मैं, ठीक है राहुल मौर्य, I will talk about response time. Response time के ऊपर एक जनरल डिस्कशन करूंगा मैं, जस्ट एट द एंड ऑफ CPU शेड्यूलिंग चैप्टर. रेस्पॉन्स टाइम के ऊपर डिस्कस करूंगा मैं. Consider the following table of arrival, okay, arrival burst times. The preemptive shortage of first scheduling algorithm is used. Preemptive shortage of first. What is the average waiting time? Come on. Very simple. Gantt chart बनाएंगे and you are going to tell the answer. You are going to tell me the answer. चलिए, this CPU time starts at 0. We are going to start with process P0 till 1. It get preempted by P1. P1 is going to run for all 4 units. 1 plus 4 5. इसके बाद रन करेगा P0 because P0 has balance of 8, P2 has balance of 9, so 8 units रन करेगा 13. Then after that P2 13 plus 9 22. ये हो गया आपका Gantt chart. Please tell me what is the answer for this. What is the answer for this, Chandra Prakash? Waiting time. P0 waiting time is P0 came at 0. And here it has waited for 4 units, 1 to 5, 4 units. P1 has not waited anything. P2 has waited for P2 2 to 13, मतलब 11. 11 plus 4 15, 15 by 3 5. Orally you can do 5. बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सिंपल है, आप कर सकते हो. जो इंपॉर्टेंट है मैं ले लूंगा. हाँ, ये जरा इंपॉर्टेंट है. आई विल मार्क इट एज ए स्टार क्वेश्चन. Just let us verify. This slightly logical question. इसका वेरिएशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. So I would like everybody to please have a look at it. I would like everybody to have a look at it.
come on. ठीक है, हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस? निशु कुमार, आई विल टॉक अबाउट ये क्वेश्चन के बाद मैं जाके हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस है बता दूंगा. चलिए, what is the answer for this? A scheduling algorithm assigns priority proportional to, so priority is proportional to the waiting time of process I. Process priority is proportional to the waiting time of the process. Every process starts with priority 0, the lowest priority. ठीक है? The scheduler reevaluates the process priorities every t units of time. Every fixed amount of time priorities reevaluate हो रहे हैं and decide the next process to schedule. Which one of the following is true if the processes have no IO operation and all processes arrive at time 0? मतलब ready queue जो है आपकी, whatever ready queue you have, in the ready queue you are going to assume that you will have all processes available in the order P1, P2, P3, so on, some Pn. So initially the priorities of all the processes are 0, right? So naturally when all processes have equal priority, so we are going to schedule the first process here. So it runs and it is allowed to run for t units, after which it get preempted because we are reevaluating the priority. ये processes काफी wait कर चुके हैं. The waiting time of P1 is still 0. So therefore P2 will have higher priority than P1. P3 will have higher priority than P1. So therefore next in line is P2. P2 will run. So this will be treated exactly like round robin. So therefore the correct response for this is option B. बिल्कुल सही आंसर. Option B is the correct answer. Round robin. चलिए इसका आंसर, अच्छा यहाँ पर जो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन है विथ रिगार्ड टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड, इसका थोड़ा डिस्कशन करूंगा मैं ताकि यू डोंट मेक मिस्टेक. So one is CPU scheduling overhead. The other parameter is context switch. तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा मैं so that you don't make mistake in the exam. Generally many people are having misconception with regard to this. When I use the word context switching, sometimes CPU scheduling overhead and context switching both are same, considered to be same. Lekin ideally speaking, the borderline difference, the hairline difference between them is something like this. Please follow me. Because the word context switch is used when I am switching from one process to another process, whether it is preemption or no preemption. When I am switching from one process to another process, मतलब कोई process PI is running on CPU, वो terminate हो रहा है या complete हो रहा है या IO operation के लिए जा रहा है या preempt हो रहा है. The context of PI is active, which will be replaced by another process PJ. So this is really called context switching, which involves overhead. CPU scheduling overhead generally term जब use किया जाता है when, for example, I am scheduling the first process for the first time in the schedule from ready queue onto CPU, where there was no switch from one process, user process to another process. User process कह रहा हूं मैं, not system process. एक यूजर प्रोसेस से दूसरे यूजर प्रोसेस पे जब शिफ्ट करोगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. जब हम सिर्फ फर्स्ट टाइम कोई प्रोसेस को लोड कर रहे हैं तो जब उससे पहले तो कोई प्रोसेस एक्टिव नहीं था सीपीयू पर, नो यूजर प्रोसेस वाज एक्टिव. सो देयरफॉर दैट वी कंसीडर एज ओनली लोडिंग टाइम ऑफ पीसीबी ऑनटू सीपीयू. दैट जनरली वी कॉल इट एज शेड्यूलिंग ओवरहेड. दैट इज जनरली कॉल्ड एज शेड्यूलिंग ओवरहेड. देखिएगा, दिस आई विल कंसीडर एज शेड्यूलिंग ओवरहेड. दिस आई कंसीडर एज कॉन्टेक्स्ट स्विच. This I consider as context switch. This I consider as context switch. This is not context switch. Why? Because here I have not switched from one process to another process. So that is the reason why sometime in gate there was a question, ignore the first and last. ये मतलब है. हालांकि ignore का मतलब ये नहीं कि वहां पे नहीं होगा,
होगा, शेड्यूलिंग ओवरहेड होगा, टाइम फॉर लोडिंग द पीसीबी होगा, लेकिन इग्नोर इस बात से कर रहे हैं कि बिकॉज दैट इज नॉट रियल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, दैट्स व्हाई दे से इग्नोर इट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो द रियल कॉन्टेक्स्ट स्विच इज 1 2 3. सो कॉन्टेक्स्ट, यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है का मतलब यह नहीं है कि देयर इज नो शेड्यूलिंग ओवरहेड, देयर इज अ शेड्यूलिंग ओवरहेड. आपको डेल्टा ऐड करना पड़ेगा. यू कैनॉट ऐड ए डेल्टा हियर, यू कैनॉट डोंट ऐड द डेल्टा एंड यू ऐड इट हियर, दैट इज रॉन्ग. ये गलत बात है. ये डिफरेंस अच्छी तरीके से समझेगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल में देखा हूं जनरली many people are having misconceptions with regard to this, including DPP and test series. So please be very clear with this aspect. So don't think that there is no overhead. अगर क्वेश्चन में ओवरहेड दिया गया है तो यहां पर आप ओवरहेड ऐड करना पड़ेगा. जब यहां पे ऐड कर रहे हैं तो आप यहां पे भी ऐड करोगे, यहां पे भी ऐड करोगे, यहां पे भी. लेकिन मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड शेड्यूलिंग ओवरहेड मैंने आपको डिफरेंस बताया. ये ठीक है, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, एवरेज वेटिंग टाइम फिर से, एवरेज वेटिंग टाइम फिर से एक बार वर्कआउट कर लीजिएगा एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज जनरली कल गेट डीए के पेपर में वही बच्चों ने रिपीट किया, सर कॉन्सेप्ट पता था लेकिन कंप्यूटेशनल मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से 3 मार्क चले गए. 3 मार्क आ सकते थे, 3 मार्क चले गए कंप्यूटेशनल मिस्टेक से. तो इसलिए मेरी अपील है आपसे, प्लीज डू कंप्यूटेशन, मेक यूर सेल्फ कंप्यूटेशनल फास्ट. Come on. If priority is not there, then we have to give additional information. Why question is not visible? The average waiting time of the process is dash, numerical answer type है. Come on. मैं गैंट चार्ट बना दूंगा आपके लिए. CPU time 0, we start with P1, run till 2, then this become 10, then P2 is shorter. P2 will run till 2 plus 4 6, complete. P2 is over. Now time is 6. By time 6 I have P3, I have P1, only these two processes, P3 and P1, because P4 is coming at time 8. So therefore who is having, P3 is having lesser burst time. This will logically run till 8. 2 units consumption. So its balance is 4. So this is the situation right now. So P3 itself is shorter, no context switching. P3 will only continue for 4 units. 8 plus 4, 12. This will be followed next by P4. P4 will take 5 units, 17, and then finally P1, 10 units, 27. I hope the Gantt chart is clear. I hope the Gantt chart is clear. बोलिएगा एक बार. Is the Gantt chart clear? Kritika Yadav, have you got the same Gantt chart? SRTF? Come on, boys and girls. Some people are saying 5.5. Rakshit Sri is saying 6. Why discrepancy, please? Clear. So for this, answer is 6 or 5.5. Is it 6 or 5.5? Waiting time. Waiting time of P1 is 2 to 17, 15 units. P2 is 0. P3 came at 3 units. So 15 plus 3, 18. 15 or 3. P4 8 to 12, 4. 12. So 22 divided by 4. 5.5. I think 5.5 is correct. 5.5 is correct. So those who got 6, please verify where you are going wrong. Where you are going wrong? सोच समझ के देखिए, अगर कोई 6.75 भी आ रहा है आंसर. 22/4 is correct. 22/4 is correct. चलिए, ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है. आई होप यू कैन डू इट. सिमिलर क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट. प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है.
Preemptive priority based scheduling का क्वेश्चन है. Tell me the answer for this. Do you remember this question, boys and girls? In my paid batches, I used to solve this question with slight variation. ये actual gate question है. This is actual gate question. But I would advise, because this is one of the star question. ये star question है. Even if you remember that we have solved, मैं चाहूंगा कि फिर से आप सॉल्व करो. जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़े वेरिएशन भी डिस्कस करेंगे हम. Come on. Please work out. Read the question, attempt the question in finite amount of time. Okay, very good. I am starting the question. Please, first I will formulate the data set. So dear students, please have a look here. I have three types of tasks. We'll call P1 instead of T1, T2, P2, P3, P1, P2, P3. The arrival of the first instance is 1 unit, 1 millisecond. The burst time requirements of each of them. These arrival. This is the burst time. 1, 2, 4. Okay? And each task arrives at a regular intervals of time of 3, 7 and 20. The first instance of P1 is available at 1, P2 at 1, P3 at 1. Next will arrive at a period of 3, 1 plus 3, 4, 1 plus 7, 8, 1 plus 20, 21. So the priority of each task, priority of each task is the inverse of this, 1 by 3, 1 by 7, 1 by 20. ये highest task, highest priority है, lowest priority. Highest priority and lowest priority. It's an interesting question to draw the Gantt chart using preemptive priority based scheduling. The arrival of the task you can mark here. Next task or next instance of P1 will come at time 1 plus 3, 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 3, 16, like that it goes. Next, this will be available at time 7 plus 1, 8, 8 plus 7, 15, 15 plus 7, 22 and so on. This will be available at 21, 20, 21, 21 plus 20, 41, 41 plus 20, 61 and so on. This is the organization of your data. This is the organization of the data. Now, if you try to draw the Gantt chart, listen here. So, when all the three tasks are available to P1, P2, P3 at time 1, so 0 to 1 is idle. 0 to 1 is idle. So, which task is having highest priority? P1 is having highest priority. P1 first instance will run for 1 unit, 2. Right, this is the ready queue. So, in ready queue I have P1, I have P2, I have P3 first instance. So, P1 is over. Next instance of P1 is going to come at time 4. Right now time is 2. So, higher priority is P2 first instance. Requirement is 2 and it is going to run for 2 units, 4. 2 plus 2, 4. Exactly at 4, we have received P1 again. So, therefore, P3 and P1 is higher priority. P1 second instance run for 1 unit, 5 it completes. Right? 5 it completes. So, this is over. Then P3 will take the charge, first instance.
require 4, but it runs only up to 7. Why? Because at 7 P1 come again, and P2 will come at 8. So P1 will take the charge, third instance, complete at 8. At 8 again P2 comes, second instance, 8. P2 is having higher priority, P2 take the charge, second instance. 10 units it completes. Exactly at time 10, P1 next instance will come and that will take the charge, 4th, 11. Now P1 is over. P2 next instance coming at 15. Now I have only P3. P3 earlier ran for 2 units. So now remaining 2 units it will run. 11 plus 12, 11 plus 2, 13. So therefore the completion time of process P3 is 13. The answer for this is 13, not 12. Beginning of 13, end of 12. So that is the answer for it. ठीक है? 1/3 is higher value than 1/20. Shubham Mishra. 1/3 is having higher value than 1/20. Higher number, higher priority. Larger number, higher priority. चलिए next question. ये turnaround time के लिए है. Shortest remaining time first का turnaround time. I am sure you can do it. Let us work out this question. रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा प्लीज. रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. यस, नेचुरली मिनिमाइज जब बात होगी, मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम की, दैट विल हैपन विद शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. सो देयरफॉर अमंग द ऑप्शन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, वर्कआउट कर सकते हो आप. प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पर काफी क्वेश्चंस आए हैं, सो आई एम लीविंग सिमिलर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन वर्कआउट. दिस आल्सो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए. ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड है. आई वुड लाइक यू टू वर्कआउट. प्रायोरिटी बेस्ड है. I would like you to work out this question. Please work out. Consider a set of processes with arrival time in millisecond, CPU burst time in millisecond, priority 0 is highest, shown below. Average waiting time of all processes using preemptive priority base. Come on, ये preemptive priority based scheduling का question है. I would like you to work out and tell me. Come on, work out please. Don't waste time. Improve your practicing skill. Improve your computational skills. ये एक advantage है session का, so that you can ignore, you can avoid, prevent silly mistakes. ये एक opportunity है आपके लिए. Preemptive priority based scheduling with 0 being highest priority. It is said 0 is highest priority. Look at this. 0 is highest priority and this is lowest priority. 0 is the highest priority and this is lowest priority. Prepare the Gantt chart. Tell me what is average waiting time. What is average waiting time? Come on. यहां पर मैं भी बना रहा हूं Gantt chart, देख लीजिएगा. 0. P1 is the only process. Continue till 5. Will it get preempted or not? Yes, it will get preempted in favor of P2 because P2 is having highest priority. Among all processes, P2 is having highest priority. So naturally P2 will take all its time. 5 plus 28, 33, because that is highest priority. फिर उसके बाद देखिएगा, no new process is coming, every process has come. तो इसमें से सबसे highest priority बनेगी P4 की. P4 is going to consume 10 units, 43. फिर उसके बाद next highest priority है P1 की. P1 has a balance of देखिए 5 units मतलब 6, तो 49. So P1, P2, P4 are completed. Then I have P3. And P5. P3 will run for 2 units, 51. And after last P5 will run. P5 will run for 16 units. So 7 है, 16. So 67.
देखिएगा गैंट चार्ट इसी तरीके से. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट द सेम गैंट चार्ट? हैव यू गॉट द सेम गैंट चार्ट बॉयज एंड गर्ल्स? Is it the same Gantt chart? Come on, come on, come on. The gift. I have done preemptive only. Here I have preempted. Look at this. सिर्फ एक ही preemption है, उसके बाद preemption नहीं है. I hope you are understanding. P1 के बाद P4 कैसा आएगा भाई? अच्छा. Oh yeah, I think I made a mistake. Yes, यहाँ पे I didn't observe this too. I made a mistake. Yes, P1 के बाद P4. I think this is a mistake. चलिए फिर से बनाएंगे. I didn't observe this arrival time too. So 0, P1 will start till 2 units. Because this arrival time 2, I didn't observe this, I'm sorry. So this is 2. So P4 is having higher priority. P4 will continue from 2 to 5. P4 will continue from 2 to 5. P2 will preempt. Right? So P2 has run from 2 to 5 means 3 units. Sorry, P4 has run for 3 units. Matlab its balance is 7. This balance is 9. Remember that. Now P2 is having highest priority. So it is going to run for 28 units. 28, 33. That's right. So P1, P4, P2, 33. अब यहां पर आप चलाइएगा. So next is next highest priority P4. P4 has a balance of 7 units, so 40. And then after that P1 has a balance of 9, 49. And after that P3 has a total balance of 2 units, 51. And after that P5 16. So therefore 16 means 7, 67. Check. Now check please. Now check. Is it correct? तो जैसे मैंने मिस्टेक किया वैसे ही आप भी कर सकते हो. You have to be careful. That is what I am saying. Everybody is prone to make errors. Everybody is bound, so you have to be extremely careful. Like I ignored this too. मेरा साइट यहीं पे रुक गया था. You have to see this too also. So what is the answer for this please? What is the answer for this? Average waiting time. What is average waiting time? What is average waiting time? Come on boys and girls, fast. What is average waiting time? Because it's asking average waiting time. P1 has waited from 2 to 40. Matlab 38. If I am not wrong. 38. P2 came at 5 and got completed 5. So therefore 0. P3 came at time 12. It got scheduled at 49. So 49 minus 12. 49 minus 12 means that is 7 and 37. P3. Then P4 came at time 2 and got scheduled at 2. So therefore no waiting. Sorry, no. P4 here first was 0 and later from 5 till 33. So 5 till 33 will become 28. 1, 2, 3, 4. Last P5 came at time 9 and got scheduled only at 51. So 51 minus 9. 42. This divided by 5. I hope that's correct, because different people gave different answers. 30, 0, 37, 28, 42. Correct. 38, 37 I think. Correct. 28, 42. So this will come out to how much boys and girls? 29. Okay, fine. 29. हाँ, ये हो गया है आपका आंसर 29. Now my question to this problem is, listen to me. Can you also tell me what is average response time of these processes? Come on, let me see. Please work out. So far I have not done. Now I am doing. What is average response time of all the processes? Tell me. What is average response time?
Is it same as 29 or is it different? Please work out and tell. Please work out and tell what is average response time. What is average response time? Come on, boys and girls. What is average response time? Let me see how many of you give me the correct answer. रोहित रॉय, प्रणाम. प्रणाम या प्रमाण, दोनों में फर्क है ना. प्रमाण और प्रणाम दोनों में फर्क है. $22, $42. Oh my God. चलिए, I am working out for average response time. See on board, those who do not know what is response time, please have a look. Please have a look. Please have a look. Difference from waiting time to response time. Response time of a process. Listen to me, boys and girls. Response time of a process is defined as the time of the arrival of the process to the time for the first time it runs on CPU. For the first time it gets a chance to run on CPU. That is called response time. उसे response कब मिला on CPU पे? चलिए, P1 came at 0, immediately got at 0, so 0 is the response time of P1. P2 came at time 5, it got respond at time 5. It came at 5, it got responded, 0. P3 came at 12. Look at this. P3 came at 12. यहां 12, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी मिली 49 पर P3 के लिए. तो 49 minus 12. 49 minus 12 मतलब 37 plus P4 came at time 2, got scheduled at time 2, 0. P5 came at time 9, it got scheduled at 51. So 42 again, 42 divided by 5. So this is nothing but 79 divided by 5. So 5 ones are 5, 6, 7, 5 5s are 25. 4, 5 8s are 40. 15.8. So those who said 15.8 is absolutely correct. Potentially ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है. रेस्पॉन्स टाइम इज डिफाइंड. रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है, थोड़ा एक छोटा डिस्कशन कर लूंगा. मैं पहले भी आपको बताया था, सुनिएगा प्लीज. रेस्पॉन्स टाइम is defined for two things. We have response time of a process and response time of a request of a process. ये दोनों चीजें आपने समझना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. Response time of a process is the time duration from arrival time of process I to first schedule onto CPU. यह है response time. यह है response time. The time duration from the arrival of the process to the first schedule onto CPU. किस टाइम पर वो शेड्यूल हो रहा है, that is called response time. And request of a process, जब request की बात होगी, सुनिएगा, process में भी associated with a several request. The response time of request जब बात पूछी जाएगी, जो मैंने अपने paid batches में वर्कआउट किया था, then time of admitting the request,
of process I to the time at which its results starts initiating by consuming CPU time. ये है डिफरेंस, by consuming CPU time. Yes, सृष्टि चौधरी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन ऑफ वंश. वंश का जो क्वेश्चन है उसके लिए सृष्टि का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. यह आपको कहीं भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा प्लीज. सो रिलाई ऑन माई नोट्स हियर, रिलाई ऑन माई लेक्चर हियर. डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस एंड रेस्पॉन्स टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ए प्रोसेस. This is, I am telling you the reference also. This reference I am taking from a textbook of operating system by name Dhamdhere. आप देखना चाहो तो देख सकते from the textbook of Dhamdhere. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैं इग्नोर करूंगा. इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. टेल मी द आंसर. रीजनिंग क्वेश्चन, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लूंगा. टेल मी द आंसर फॉर दिस. Turnaround time includes waiting time, yes or no? Yes, it includes waiting time because the formula for turnaround time is equal to completion time minus arrival time. तो ये ड्यूरेशन में आपका वेटिंग टाइम भी रहेगा. The goal of the CPU scheduler is to maximize CPU utilization. ये सही है, लेकिन and minimize throughput ये गलत है. मिनिमाइज, जब आप CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो रहा है तो थ्रूपुट भी मैक्सिमाइज होगा, मिनिमाइज नहीं होगा. कॉन्ट्राडिक्टरी होगा स्टेटमेंट. राउंड रॉबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट नोन beforehand a priori. Correct. Implementing preemptive scheduling needs hardware support in the form of interrupt control. So therefore these also correct. So as an MSQ question, ACD are correct. ACD are correct. चलिए मैं चाहूंगा बच्चों सिंक्रोनाइजेशन से पहले आई विल टेक अप मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस. मेमोरी मैनेजमेंट के बाद फिर हम सिंक्रोनाइजेशन पे आएंगे क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट पे टाइम ज्यादा थोड़ा स्पेंड करेंगे. वी एंटिसिपेट बिकॉज जनरली आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स हैविंग ए स्ट्रगल विथ रिगार्ड टू मेमोरी मैनेजमेंट आल्सो. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ए सिस्टम यूजेस FIFO पॉलिसी फॉर पेज रिप्लेसमेंट. इट हैज 4 frames with no pages loaded, pure demand paging. The system first access 100 distinct pages in some order. That means distinct pages are there 1 to 100 in some order it access. But now in the reverse order. लेके देखिएगा same in the same order है actually. Some नहीं same order 1 to 100. फिर उसके बाद फिर से 100 से reverse में जाएगा up to 1. Then how many page faults will happen with a FIFO replace? Sorry. With FIFO replacement, how many page faults will occur? Naturally, total references अगर आप including 100 count करेंगे तो 200 होंगे, right? तो 200 minus 4 because जब reverse में आप करोगे तो 100, 99, 98, 97 ये page faults नहीं होंगे, 96 to 1 होंगे. So therefore the correct answer for this is 100 plus 96, 196. Correct answer is 196. चलिए ये भी बहुत सिंपल है. ये सिंपल क्वेश्चन है. Calculation mistake generally people make here. So I would like you to please work out this. Please work out this. Let the page fault service time be 10 milliseconds. In a computer with average memory access time being 20 nanoseconds. Main memory access time is 20 nanoseconds. If one page fault is generated for every 10 power 6 memory accesses, what is the effective access time for the memory? डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट है. डिमांड पेजिंग डीपी. तो बच्चों देखिएगा डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट है. यू विल हैव टू यूज द इक्वेशन इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इन डिमांड पेजिंग इज इक्वल टू
1 minus P into S plus P, sorry, 1 minus P into M, P is the page fault rate, into M plus P into S, where memory access time M is given to be 20 nanoseconds. Page fault service time S is given to be 10 milliseconds. You have to be careful with the units. Page fault rate is equal to 1 by 10 power 6. Tell me the answer, please. Tell me the answer, please. Sorry, please. Okay. I'll put the values. You can simplify. So 1 minus P will be nothing but 1 minus 1 by 10 power 6. So therefore, this is almost 1. Almost 1 you can say. So 1 into memory access time. Memory access time is 20 nanoseconds. Is 20 nanoseconds. So therefore, 1 into 20 nanosecond, 10 power minus 9 seconds, plus page fault rate 1 by 10 power 6 into service time 10 millisecond, 10 into 10 power minus 6 10 power minus 3. ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर. ठीक है ना? वेरी सिंपल एंड क्लियर अप्रोच. तो क्या बनेगा बच्चों आंसर? ये देखिएगा 20 इंटू 10 पावर माइनस 9 प्लस 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 पावर माइनस 9. स्ट्रेट अवे बन रहा है आंसर 30 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड्स. तो मतलब स्ट्रेट अवे 30 नैनो सेकेंड्स. सो देयरफॉर द आंसर इज बी. लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल मेरे और व्हाट्सएप ग्रुप भी जो अवेलेबल है उस पर भी कई बच्चे ये पूछते हैं सर यू आर डूइंग रॉन्ग, sir you are doing wrong. I don't know from where they are getting me wrong. This concept repeatedly I am telling, I am taking from the textbook of Galvin. बार बार बता चुका हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं. Some people would say, some instructors would also say, let me tell you, some instructors also would say, no sir, effective memory access time for demand paging also you will have to take it like 1 minus P into M plus M, 2M plus page fault service time is nothing but M plus S. तो मेरी गुजारिश ये है आपसे, तो पर्टिकुलरली फॉर क्वेश्चन लाइक दिस, ये क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला से अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको 30 नैनो सेकेंड आंसर नहीं बनेगा. यू वोंट गेट इट, यू वोंट गेट इट. नहीं सर मैं अप्रॉक्सीमेटली करके डालूंगा, 32 को 30 अप्रॉक्सीमेट करूंगा. तो 32 को आप 30 अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 32 को 35 भी कर लीजिए आप. यू डू इट 35 ऑल्सो. ठीक है? So that's the point. So many gate questions, let me tell you, at least 4 to 5 gate questions were totally asked exactly based on this concept. For demand paging, please use this formula, effective memory access time. हाँ, जब TLB दी जाएगी वर्चुअल मेमोरी में, TLB दी जाएगी तो then we go for full expansion. That's I already told. ठीक है ना? निशु कुमार इज सेइंग गलत है, मतलब ये गलत है या ये लेफ्ट साइड इज गलत और राइट साइड इज गलत? ठीक है ना? निशु कुमार ये सेइंग ये गलत फार्मूला है, तो भैया कौन सा गलत बोल रहे हो आप? निशु कुमार इज सेइंग विच वन इज गलत? लेफ्ट वन इज गलत और राइट वन इज गलत? Nishu Kumar is saying I am asking something, you are telling something else. ठीक है, चलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा. चलिए, some people were asking about question from मल्टी लेवल पेजिंग. ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टी लेवल पेजिंग पर, जिसकी बेसिस पर मैं जनरली एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बनाता हूं. सो प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन and try to answer. Come on, read it. It's an interesting question on multi-level paging. Ignore this. This was actually there in the gate question, so ignore this now.
Spooled, somebody was asking a question, spooled device. ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको. I will try to explain what is the concept of spooling and what is a spooled device. What is the concept of spooling and what is spooled device? I will explain. Rahul Maurya, I will explain. I will tell you. मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा. First, meanwhile, we'll complete this question. Come on. ये क्वेश्चन हम पेड क्लास में वर्कआउट किए थे, फिर एक बार वर्कआउट कर रहा हूं. ए कंप्यूटर यूजेस 46 बिट वर्चुअल एड्रेस, 32 बिट फिजिकल एड्रेस, 3 level paging, page table organization. The page table base register stores the base address of the first level page table T1, which occupies exactly one page. Outer page table fits in one page. ये मतलब है. Each entry of T1 stores the base address of the page of the next level page table. ये तो हम already as per definition है. Each entry of T2 stores the base address of page of the third level page table. That is the definition. Each entry stores a page table, and each entry of T3 stores a page table entry PT. The PT is 32 bits. Page table entry size is 32 bits. So question is, यहाँ पर question है next page पर. What is the size of page in this computer system? What is the size of the page in this computer system? Page की size क्या है? So here we are assuming that uniform page size is used at all levels of paging. Uniform page size, right? So he's asking directly what is the page size, right? What is the page size? Question is what is the page size? So let's imagine, without losing any generality, let page size equal to 2 power x bytes. There are two ways of solving this question. One is by convention, other is by addressing. Convention का मतलब जो आपका definition है multi level paging का. So if you go for one level paging, first point, if you are going for one level paging, so let me write one level paging. If you go for one level paging, आपका page table का size क्या बनेगा? PTS. Size of the virtual address 2 power 47. 2 power 47. Okay, sorry, 46. 2 power 46 divided by page size 2 power x. Number of entries in the page table multiplied by entry size. Entry size is 4 bytes. 4 bytes. Is it not? So therefore this will become like 2 power 46 minus x plus 2 bytes. Correct? This will become my page table if I go for one level paging. ये मेरा page table की size होगी bytes में 2 power 46 minus x 2 power 2. So therefore I have added 2 here. Very correct. इसके बाद अगर 2 level paging पे जाओगे आप, यहां पर हम कर लेंगे. Look at this. If I go for now second 2 level paging, when I go for 2 level paging, तो ये जो पेज टेबल है ना, either way you can divide this number of entries by number of entries that you can see that you can store in one page table or directly page size. क्योंकि बाइट्स में है तो आप पेज साइज इन बाइट्स 2 power x आप कर सकते हो. So what will your page table size become? Page table size, I will write second level page table size क्या बनेगा? So number of entries, this page table address space 2 power 46 minus x plus 2 divided by 2 power x in bytes. These are the number of entries. Into entry size 4 bytes. Into entry size 4 bytes. तो क्या होगा? ये आंसर बनेगा 2 power 46 minus 2x plus 2 plus 2 bytes. ये आपका सेकेंड लेवल पेजिंग पर पेज टेबल साइज बनेगा. इफ यू गो फॉर थर्ड लेवल, इफ यू गो फॉर, यहां पर हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन 3 level पेजिंग, जो हमारा क्वेश्चन है 3 level पेजिंग. इफ आई गो फॉर 3 level पेजिंग, so outer page table size क्या बनेगा? This you have to divide by page size. So therefore 2 power 46 minus 2x plus 2 plus 2 divided by 2 power x multiplied by entry size 4 bytes. So this will become 2 power 46 minus 3x plus 6 in bytes. This you should be able to store in one page. Page size is 2 power x. So therefore by that condition 2 power 46 minus 3x plus 6
should be equal to 2 power x. Solving for x from this side, x is equal to 13. Therefore, page size is equal to 2 power 13, 8 KB. Conceptual approach है. Other approach is you can go for addressing. You can go for addressing. Addressing का मैं अपने पेड क्लास में बताया था, वो भी एक short method है, लेकिन generally some students will have a struggle with addressing. That's why I prefer this approach. So answer for this is 8 KB, option C. Option C. So this is a question on multi-level paging. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट्स मैं आपके छोड़ रहा हूं, देखेंगे जस्ट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कितने लोग सही बताते हैं, आंसर देखेंगे. बिल्कुल बन सकता है. सेगमेंटेड पेजिंग में मल्टी लेवल पेजिंग इंक्लूड कर सकते हैं, सेगमेंटेड पेजिंग में भी मल्टी लेवल पेजिंग इंक्लूड करके क्वेश्चन आ सकता है. यस. तो बेस्ड ऑन दिस आपका जनरलाइज फार्मूला अगर आप चाहो, वी कैन मेक ए जनरलाइज फार्मूला फॉर दिस. तो जनरल फार्मूला फॉर ओपीटी, आउटर पेज टेबल, outer page table size का general formula for n level paging is address space minus number of levels of paging multiplied by x plus L into C. This will be the outer page table size, assuming uniform page size at every level of paging. आप as a general formula आप ये ले सकते हो. 2 power x is virtual address space, 2 power x is page size, L is the number of levels of paging, 2 power C is page table entry size, page table entry size. ये जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज, जस्ट टू वेरीफाई दैट यू आर कंफर्टेबल विथ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स. यू आर कंफर्टेबल विथ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स. कम ऑन, वर्कआउट. टू पावर सी इज पेज टेबल एंट्री साइज. निशु कुमार, 2 power C is page table entry size. Like in our previous example, it was 2 power 2. C was 2 power 2. हाँ, कुछ डिस शेड्यूलिंग के भी क्वेश्चंस वर्कआउट करेंगे. कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिस शेड्यूलिंग आल्सो. कम ऑन, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट मैं नहीं करूंगा, आपने करना है. यू शुड वर्कआउट. हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स? 3 frames, 3 page frames. Optimal replacement. Number of page faults are how many? I think 7 is correct answer. I think 7 is correct answer. So therefore we'll go with 7. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ये भी बहुत सिंपल है. I think you can do it. There is no problem. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. TLB हिट रेशियो और मिस रेशियो है. And memory access time दिया गया है. डायरेक्ट इक्वेशन है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा गया है. दिस इज ऑल्सो सिंपल वन. दिस यू वर्कआउट एंड टेल मी प्लीज. दिस क्वेश्चन यू वर्कआउट. पेज टेबल साइज पूछा जा रहा है. वेरी सिंपल. So page table size is equal to number of entries 2 power 32 divided by page size. Page size is 4 kilobytes, 2 power 12, right? Into entry is 4 bytes. So therefore 2 power 20 into 4 bytes, which is equal to 4 megabytes. So the correct answer is 4. 4. Very simple. Very simple. This is also simple one. Comparison between FIFO and LRU. आप कर सकते हो. देयर इज नो डिफरेंस. एंड हाँ, चलिए ये क्वेश्चन एक बार वर्कआउट कीजिएगा एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. वी डिड दैट इन आवर पेड क्लास, बट यू कैन स्टिल वर्कआउट एंड टेल मी. यू कैन स्टिल वर्कआउट एंड टेल मी प्लीज.
What is the length of virtual address? He is asking what is the length of virtual address. Virtual address की length क्या होगी? Virtual address will have two parts, P and D. Page table size is given 24 megabytes. Page table size is given 24 megabytes. Please observe. Page table size 24 megabytes. This is nothing but n into E is equal to 24 MB. The value of n we have to find. So the value of n is equal to 24 MB divided by E. We have to get the value of E from the given information. Each table entry contains a valid bit. Mandatory bit is frame number, valid bit, a dirty bit D, and 3 permission bits, permissions. 1, 1, 3. So we need to find the value of F. Translation means F, frame number. So frame number depends on number of frames. 32 bit is physical address space. So number of frames are 2 power 32 divided by page size. Page size is 8 kilobytes. 2 power 13 equal to 2 power 19. There are 19 bits. 19 bit is frame number 19. So 20, 21, 23, 24. 24 bits. 24 bits means 3 bytes. So the value of E is 3 bytes. So therefore 24 MB divided by 3 bytes. 8 megabytes, 8 mega frames, 8 mega pages. There are 8 M pages. 8 M pages implies page number is 23 bits. Page number is 23 bits. So this is 23. Offset is 13 bits, 8 KB. So this makes it 36 bits. So therefore the answer for this is 36. Some people got the answer, 36. These are very conceptual questions and very interesting. You have to be very attentive with this. So थोड़ा information vary कर सकते हैं यहाँ पर, and then accordingly you will be given the question. चलिए next question देखेंगे. ये काफी simple question है. I think you can do it. This is also again one level page table. चलिए इसका आंसर सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिएगा प्लीज. Let me see whether you remember the concept or not. In which of the following page replacement algorithm it is possible for the page fault rate to increase even when the number of allocated frames increases? FIFO is the correct answer. Along with FIFO अगर मैं पूछूं, for example, if option would have been there, अगर FIFO के साथ साथ कोई और ऑप्शन होता तो वो कौन सा algorithm होता which may suffer from Belardi's anomaly? This is nothing but Belardi's anomaly. If you remember, Belardi's anomaly. So among all the replacement techniques, which replacement techniques are bound to suffer from Belardi's anomaly? The one which suffer from Belardi's anomaly, if you remember, I said is FIFO. Plus what? There is one more one. Yes. Manish Ojha is correct. Very good. Random replacement. And there is one more. Let me see who will answer. There is one more. What is that? Not LRU approximation में कौन सा? Rahul Gupta. LRU approximation में कौन सा? Very good, Mohammad Asif. This is second chance. These are the algorithms that may suffer from Belardi's anomaly because they are bound to work like a FIFO. They may degenerate to work like FIFO. That's why they may suffer from Belardi's anomaly. FIFO by nature, लेकिन random replacement may degenerate to FIFO, therefore it may suffer. Second chance may degenerate to work like FIFO, therefore it may also suffer from Belardi's anomaly. हाँ, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेटेस्ट पेपर है 2020 का, जल्दी बता दीजिएगा प्लीज. रीजनिंग क्वेश्चन है. जनरली पीपल मेक मिस्टेक इन दिस. Come on, tell me the answer for this.
Consider allocation of memory to a new process. Assume that none of the existing holes in the memory will exactly fit the process memory requirement. ठीक है, मतलब प्रोसेस का साइज बड़ा है, hence a new hole of smaller size will be created. मतलब जब भी आप प्रोसेस को allocate करोगे, जो भी allocation policy से आप allocate करोगे, तो एक new hole create होगा. मतलब new hole create हो रहा मतलब variable partitions. Variable partitions. Which one of the following statements is true? The hole created by next fit is never larger than the hole created by best fit. जरूर हो सकता है larger, तो therefore not correct. The hole created by worst fit is always larger than the hole created by first fit. Always larger नहीं बोल सकते आप, क्योंकि it can be equal also. It can be equal also. So therefore it is not correct. The hole created by first fit is always larger than the hole created by next fit. No, it can be equal or maybe less also. The hole created by best fit is never larger than the hole created by first fit. Never larger. Equal हो सकता है लेकिन larger best fit से नहीं हो सकता है. So therefore the correct answer is D. The correct answer for this is D. बिल्कुल सही है. ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, MCQ. Please tell me the answer. He's saying is correct with regard to this. Now somebody is saying, guys, you all remember PYQ's answer. देखिएगा बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर रिमेंबर मत कीजिएगा प्लीज. यू ट्राई टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज थोड़ा भी अगर वेरिएशन हो जाएगा गेट एग्जाम में तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा. पेज साइज हैज इंपैक्ट. नो इंपैक्ट इज रॉन्ग. पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ट्रू. पेजिंग इनकर्स मेमोरी ओवरहेड्स. ट्रू. Multi-level paging is necessary to support is false. So therefore, as a MSQ question, both B and C are correct. Both B and C are correct. Abhay Singh, C is also correct. Paging incurs memory overheads in the form of page table. In the form of page table. Both B and C are correct. MCQ नहीं, MSQ है ये. That's why he's saying is or are. यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है. Don't look at that. चलिए बच्चों, थोड़े क्वेश्चन फाइल सिस्टम पे लेंगे, फिर अगर कुछ टाइम बचने के बाद हम सिंक्रोनाइजेशन पे आएंगे. सिंक्रोनाइजेशन इज ए इजी टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी. फाइल सिस्टम में जनरली पीपल विल हैव ए स्ट्रगल. सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम फाइल सिस्टम्स. क्योंकि महा रिविजन में भी हम फाइल सिस्टम में क्वेश्चन नहीं लिए थे, तो क्वेश्चंस फ्रॉम फाइल सिस्टम देखेंगे. चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन. द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फाइल सिस्टम बच्चों मेरे हिसाब से इज आइनोड स्ट्रक्चर या आइनोड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. आइनोड या मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, MLI. ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस है मेरे पास. दिस द फर्स्ट वन. डी ऑप्शन क्या है? मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस ऑफ डिफरेंट साइज. ऐसा नहीं है, पेजेस ऑफ डिफरेंट साइज के लिए मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत नहीं है. मल्टी लेवल पेजिंग का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल. पेज टेबल साइज ओवरहेड रिड्यूस करने के लिए है. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा प्लीज. हाँ, डेडलॉक्स पर भी सिंपल क्वेश्चंस है. आप मेरा महा रिविजन में देखो, काफी क्वेश्चंस हम डेडलॉक के सॉल्व किए हैं. शेड्यूलिंग पर भी है कुछ क्वेश्चंस. देखिएगा, ए फाइल सिस्टम विद 300 GB disk uses a file descriptor with direct block addresses, one indirect block address and one doubly indirect block address. The size of each disk block is 128 bytes and the size of each disk block address is 8 bytes. Hope you can solve this. Let me see who will give the answer for this. Nishu Kumar, I think you have done it with by remembering the answer. Disk block address 8 bytes. Disk block size 128 bytes. तो मतलब एक ब्लॉक में आप नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने स्टोर कर सकते हैं? 128 डिवाइडेड बाई 8. 2 power 7 डिवाइडेड बाई 2 power 3 इज इक्वल टू 2 power 4 इज इक्वल टू 16. मतलब एक ब्लॉक में 16 एड्रेसेस स्टोर कर सकते हो आप. एक ब्लॉक में 16 एड्रेसेस स्टोर कर सकते हो. क्वेश्चन लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, ताकि अगर कुछ वेरिएशन हो तो यू शुड नॉट मेक मिस्टेक. कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं मैं, तो गौर कीजिएगा प्लीज. Those who do not know about or those who have confusion with regard to Unix inode structure or inode structure or multi-level indexing, please have a look. So how many direct addresses? 8 direct addresses. So maximum file size 8 into 128.
बाइट्स। सिंगल इनडायरेक्ट से बनेगा 16 एड्रेसेस इंटू ए 128 बाइट्स, सिंगल इनडायरेक्ट। डबल इनडायरेक्ट 16 इंटू 16 into 128 bytes. So this is 8 into 128 is 1 KB. 2 power 4, 2 power 7, 2 KB. 2 power 4, 2 power 4, 2 power 8, 2 power 7, 2 power 15. 2 power 15 is 32 KB. Orally बन सकता है आपका आंसर 35 KB. So therefore answer is B. देखिएगा orally 35 KB. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, ये वर्कआउट कीजिएगा प्लीज, देखेंगे कितने बच्चे गलत करते हैं आंसर, कितने लोग गलत करेंगे देखेंगे। सही की बात नहीं हो रही है, गलत की बात हो रही है। कौन बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वर्कआउट, जो जिन्होंने भी डिस्क की बात की थी, डिस्क प्रॉब्लम्स के ऊपर, शेड्यूलिंग के ऊपर आ गया है क्वेश्चन, डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। प्लीज वर्कआउट एंड टेल मी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव रॉन्ग आंसर। Sequentially numbered from 0 to 100. Sequentially numbered from 0 to 200. See, you're on board. This is 0. This is 200. ठीक है? Let's say this is 100. Let's say this is 50. And let's say this is 150. Then we'll mark the request. Requests are 30. So let's say this is somewhere 30. Then 85. Where shall we take 85? 85. 90. 100. So 100. 105. 110. 135. And 145. चलिए, if shortest seek time first is being used for scheduling the disk access, and there is a queue, okay. At some time the disk arm is at cylinder 100. We are right now at 100. So using SSTF, please see where the people generally make mistake. I am trying to indicate. So which request do we satisfy first? At 100. So we are first satisfying 100 first request. We are first satisfying 100 first with 0 seeks. People generally make that mistake. 100 के बाद कौन सा जाएगा देखिएगा, यहां पर 90 है, यहां पर 105 है, तो naturally I will go to 105. So second request have satisfied 105. 105 के बाद कौन सा request देखेगा, 110. देखिएगा 110 है, 110, right? So it will go to 110. So 110 के बाद one option is you can go to 135 at a cost of 25, and the other option is 110 to 19 at the cost of 20. So naturally I will come to 90. So after this 90. तो क्वेश्चन पूछा ये गया था, the request for cylinder 90 is serviced after servicing how many requests? After servicing 3 requests. Correct answer is 3. So what do you want to say, Rohan? If you are at 100, will you not serve 100? You have to serve 100 with 0 seek. Please understand. You have to service 100 with 0 seeks. चलिए और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लूंगा मैं डिस्क के लिए। ये क्वेश्चन मैं बाद में आऊंगा, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज। बोलिएगा, या फिर और एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं सर्कुलर लुक का। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज सर्कुलर लुक पे जनरली पीपल मेक मिस्टेक। हाँ, सर्कुलर लुक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज वर्क आउट दिस क्वेश्चन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। सर्कुलर लुक,
चलिए मैं वर्कआउट करूंगा. Those who do not know, please have a look. But I will wait for some time for other people to respond. Consider a disk queue with request for input output to blocks on cylinders this 0 to 199. So this is 200. Sorry, 100. ये 50 है, ये 150. चलिए. The head is initially at cylinder number 63. So let's imagine here 63. Moving towards larger cylinder numbers, मतलब it is moving right on the right. The cylinders are numbered from 0 to 100. ठीक है. So let us mark the request. 47. 47. 38, 121, 191, 87, 11, 92, 10, 10. 10 and 11. This is 10, sorry. This is 10, this is 11. ये हमारा डिवीजन है. आंसर इज 346. विप्रांत मून, दैट इज करेक्ट. देखिए मैं वर्क कर रहा हूं. From 63 it will serve 87, then it will go to 92, then it will come to 121, then it will come to 191. That is circular look. Nishu Kumar, please have a look. In circular look, we'll move for like scan, but goes only up to the last request. Agar circular scan hota, तो then we will have gone to 199. That's the difference. That's the difference, please. In circular look, we'll go only up to our last request 191. Circular scan अगर होता, I would have gone up to 199. ये difference है. फिर इसके बाद क्या होगा? We'll take a reverse sweep. And then we get initialized to the first request 10. 10. Agar circular scan hota, I would have initialized to 0. And then from there I would have gone. Then I would have gone. So first satisfy hoga 11. फिर उसके बाद satisfy होगा 38. Then 47. Then 47. That's it. And 63 तो done हो गया. That's it. So length of these segments 191 minus 63 plus 191 minus 10 plus 53 minus 10. ये है आपका आंसर. ये है आपका आंसर. सर्कुलर लुक. Correct? This is a diagram. This is a diagram for this. I hope you are getting the same thing. Very good. 346 is correct answer. Absolutely correct answer. इसका आंसर जल्दी बताइएगा बच्चों. ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद स्लाइट वेरिएशंस. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. एलोकेशन मेथड्स. This question is based on your understanding of allocation methods, performance, particularly performance. Come on. Last 47 minus 10 होगा. अच्छा 50 नहीं, 53 नहीं है. सॉरी, आई एम सॉरी. करेक्ट, 53 नहीं है कोई भी. 47 ही है. 47 minus 10. Correct. Because there is no 53 here. I thought this is 63. 63 is done. 47 minus 10. Correct. Thank you. Next, इसका आंसर बताइएगा प्लीज. In a file allocation system, which of the following allocation schemes can be used if no external fragmentation is allowed?
एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। क्या कंटिग्यूअस एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लिंक में होगा? नहीं होगा। इंडेक्स में भी नहीं होगा। 2 and 3 is correct answer. Option D is correct. Many people gave correct answer. Right? अगर ये क्वेश्चन एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की बात होती, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, if I say internal, then what would have been the answer? Let me see. If I would have used the word internal fragmentation, then what would have been the answer? देखेंगे कौन बताएगा करेक्ट आंसर। Internal fragmentation. Then what will be the correct answer? Which of the following allocation scheme can be used if no internal fragmentation is allowed? Let me see who will answer. Interesting question. ऐसा वेरिएशन आ सकता है। अगर आप इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं चाह रहे हो, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं चाह रहे हो, तो कौन सा एलोकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा? एबीसीडी में से बताइए बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं चाह रहे हो तो कौन सा स्कीम यूज करना पड़ेगा? वेरी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट योर बेसिक फंडा। पीपल आर सेइंग ऑल द 3. The gift is saying all 3. Shrishti is also saying all 3. Sam Forting, all is saying all can be used for having no internal fragmentation. क्या हम all use कर सकते हैं for no internal fragmentation? I'm very sorry students. I'm very sorry. Let me tell you that हाँ, Vivekanand is correct. All will suffer from internal fragmentation. I will have internal fragmentation with contiguous, with linked and index. बोलिए, can I have internal fragmentation with all the 3 or not? बोलिएगा बच्चों। All the 3 will suffer from internal fragmentation. तो मुझे यहां पर एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा जहां पर हम बोलेंगे नन, तो जब नन करेक्ट होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। नो, यू मेड अ मिस्टेक। हर एक में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। तो इसीलिए देखिएगा यहां पर बोल रहा है इफ नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तो हमेशा होगा, हर स्कीम में होगा। सो देयरफॉर all will have internal fragmentation. None will be the answer for that. So be careful with this. I hope I am clear. The point is clear. मैंने आंसर पूछा था, you cannot say all will have internal fragmentation. I said answer. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये यूनिक साइनोड का आप कर सकोगे। इसका आंसर बताइएगा प्लीज। दिस इंटरेस्टिंग रीजनिंग क्वेश्चन। Yes, Mr. Hello or Miss Hello. Mr. or Miss Hello is asking page size has any impact on page fault rate. I discussed. Page size, larger page size will have less number of pages. Less pages means less page faults. Smaller page size means process will have more number of pages and hence more page faults. Nishu Kumar, why you are getting confused? Look, algorithm is simple. From the current request, you will go in the forward direction, for example, up to the last. फिर last में से आप reverse आइए. While coming reverse, you can satisfy the other request. That's it. That is look. That is look. चलिए, consider a linear list based directory implementation on a file system. Each directory is a list of nodes where each node contains the file name along with file metadata, such as the list of pointers to the data blocks. Consider a given directory by name foo. Which of the following operations will necessarily require a full scan? Necessarily मतलब compulsory. Necessary का मतलब है compulsory. तो let us say this is my directory by name foo. इसका नाम है foo. यहाँ पर कई files है. File 1, File 2, File 3, File 4, so on. All these are files. तो कौन सा operation will necessarily require to make full scan of the directory? पूरा search करना पड़ेगा हमें. Opening of an existing file. देखिएगा, अगर कोई फाइल को आप ओपन कर रहे हो या फाइल को ओपन कर रहे हो तो आप पूरा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। इज इट नॉट? यू डोंट हैव टू मेक अ फुल स्कैन। जैसे ही आपको फाइल नेम यहां मिल जाएगी आप डायरेक्टली से ओपन कर सकते हो। सो दिस डज नॉट मेक। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल इन फ्यू। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल बाय नेम kk.c मेरी फाइल है।
I want to create a file by name kk.c. मुझे देखना पड़ेगा कि whether there is already an existing file by name kk.c. Already there is an existing file by name kk.c. अगर होगी तो हम ये नाम से create नहीं कर सकते, तो ये definitely will require a full scan. Renaming of an existing file in foo. एक फाइल है, ऑलरेडी फाइल है, you want to rename it kk, you want to name it as ak.c. तो जब आप रीनेम करोगे तो आपको देखना होगा कि देयर इज ऑलरेडी नो अदर फाइल विद द सेम नेम, तो इसे भी मुझे पूरा डायरेक्टरी सर्च करना पड़ेगा. सो देयरफॉर दिस आल्सो रिक्वायरिंग फुल स्कैन. डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर ये फाइल को आप डिलीट करना चाहो तो आई डोंट नीड टू मेक ए फुल स्कैन इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि यहां पर खुद बोल रहा है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होना है. तो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है फुल स्कैन एवरी टाइम. हाँ, अगर लास्ट में अगर फाइल होती तो फुल स्कैन होता, अगर अनसक्सेसफुल होता तो फुल स्कैन होता. क्योंकि यहां पर पूछा गया है सक्सेसफुल, तो इसलिए फुल स्कैन की जरूरत नहीं है. अदरवाइज सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी एंड सी. अगर सक्सेसफुल वर्ड नहीं दिया जाता तो शायद हम डिलीशन के लिए भी फुल स्कैन यूज कर सकते थे. फुल स्कैन अनसक्सेसफुल हो सकता था ऑपरेशन, ये फुल स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओपनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट कर रही है यहां पे, तो सक्सेस होगी हमेशा. तो आई होप यू गेट माई पॉइंट. तो बच्चों ये हो गए क्वेश्चंस विथ रिगार्ड टू दिस. हाँ, कुछ क्वेश्चन एल्गोरिथम का तो नेक्स्ट सेशन में होगा. यहां पर मुझे आपको ये बात कहना है, सम क्वेश्चंस वेर आस्किंग विथ रिगार्ड टू some questions, some students were asking doubt with regard to spooling. So I would like to basically make a brief description with regard to spooling concept. But before that, there is an interesting comment from Mr. Hero Singh. Mr. Hero Singh with blue color. आपसे पढ़े के लिए ही मैंने पराक्रम बैच सी लिया था. अच्छा, नो डाउट यू आर ए वेरी गुड टीचर. ठीक है, बट ठीक है, आप अपने जगह सही हो. मतलब बहुत फिलोसफिकल कमेंट है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो बच्चे. मिस्टर हीरो और मिस हीरो, वॉट एवर इट इज, हीरो सिंह, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आप अपनी जगह ठीक हो, आप अपने जगह सही हो, ठीक है. मतलब आई डिडंट गेट यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कैन एनीबडी इंटरप्रेट the comment of Mr. Hero Singh and tell me? Yes, Mr. NVN, PYQ algorithm का भी होगा. Can anybody, Mr. Nishu Kumar, can you tell us what Mr. Hero Singh is trying to sell? Hero Singh, Hero Shah, whatever you say. आप अपनी जगह ठीक हो मतलब क्या है भाई? अच्छा, दुखी भी है, ठीक है. दुखी है कि आप नहीं पढ़ सक रहे हो वहां पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यू कैन ज्वाइन द प्रेजेंट प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एंड यू कैन लर्न विथ अस. देखिए, जो भी वजह से निकले दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वी डोंट हैव टू डिस्कस, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट. ऑलरेडी अंकित ने अपने वीडियो में बताया आपको सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एक्सेट्रा. तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ओके, we'll talk about spooling concept. Spooling. The word spooling came from, listen to me, the word spooling came from a word called spool. Simultaneous, इसका full form है simultaneous peripheral का मतलब devices, device, operation online. Simultaneous peripheral operation online, right? Simultaneous peripheral operation online. तो diagrammatically समझने की कोशिश करेंगे. Let's say this is our ready queue and let's say this is our CPU and there is some device like printer and this some device queue. इस सम डिवाइस की. तो चलिए, ये है हमारा प्रिंटर डिवाइस, प्रिंटर या प्लॉटर, वॉट एवर यू से. दिस अ डिवाइस क्यू, दिस CPU, दिस रेडी क्यू.
I'm trying to explain the concept of spooling by means of this diagram. Kindly pay attention. So this device is called spooling device. So there is some process PI which want to print some jobs, and there are other processes here, PJ, PK, PL, so on. Several processes are here. Several processes are here in the ready queue. ठीक है, मैं ready queue यहाँ पे लिखूंगा, ready queue, and this is a device queue. And so this process want to perform some printing operation, so it will leave the CPU, and then जो भी output उन्हें ये process को print करना है, it will spool that output. It will spool का मतलब it is just like store the output of process I. ठीक है, then PJ is going to run on CPU. So now यहाँ पर आप imagine this is your operating system. So in this operating system you have a special process which is generally called printer spooler daemon. Printer spooler daemon. Daemon मतलब a continuously running process, जो server generally we say server. So what happens is the job of this will run as a background process, not a foreground or active process, but as a background. So whenever it gets a time, or simultaneously what it does is it will see whether spooling queue does it have any output to be printed. Because this is a slow device, so it will take this output and try to print it onto the printer. तो जब printer पे ये output print हो रहा है और process I, CPU can process another job onto CPU can process another process onto CPU. CPU can do computation of another process. So simultaneously PJ is running on CPU, and simultaneously the output of process I is getting processed onto this device, printer device, which is called spooler device. Simultaneously. So look at the word simultaneous peripheral operation online. Simultaneously printing is going on and computation of printing is going on of job I, and computation of process J is going on. This aspect is called spooling. So here the spool device is called printer, which is taking outputs created by the processes from the disk like device, storable device like this, and printing it here. So this concept is called spooling. यही concept के basis पर आपको actually multi-programming का concept evolve हुआ. So this was the concept which was used before the evolution of multi-programmed operating system. So this became the foundation, the background for the evolution of multi-programmed operating system. The name itself is very clear: simultaneous peripheral operation online. Simultaneously this device and this device both are in operation online. तो बच्चों ये हुआ डिस्कशन ऑन विथ रिगार्ड टू दिस. हाँ, सिंक्रोनाइजेशन के एक टॉपिक रह गया है, वो हम फिर बाद में देखेंगे, बिकॉज more than 2 hours are already completed. And does log, yeah, whenever there is a bounded weight condition dissatisfaction, then starvation happens. Whenever there is a deadlock, then progress is dissatisfied. We have discussed. Okay, some people are demanding a discussion on working set, but लेकिन अभी time मेरे पास ना sufficient नहीं है to discuss that. But I promise that next session जब हमारा algorithm का होगा, algorithm का PYQ का discussion होगा, वहां पर मैं आपको जरूर working set से start करूंगा. I will give a review with regard to working set. Working set का review दूंगा मैं, और some synchronization के questions लूंगा, few questions on deadlocks, फिर उसके बाद एल्गोरिथम का स्टार्ट करेंगे PYQ नेक्स्ट क्लास. बिकॉज नाउ आई एम एग्जॉस्टेड and I believe many of you also might not have taken lunch. I too have not taken. So that's it for today. And next class, again I repeat, we will have a discussion on working set. We'll have some questions of synchronization, some questions of deadlock, and then I will start PYQ of algorithms. So I hope session was useful. So continue your hard work, do your level best, keep patience, calm, composed, and do the hard work without having much worries. Don't need to take any tension. Everybody will have tension. You alone will not have tension, right? So do it, take care. We'll continue in the next session. Thank you so much.